Hello students, in today's lecture we will be taking up area of a triangle when the coordinates of these three vertices are given. And till now we know when we are asked what is the area of a triangle, we say area of a triangle is half base into corresponding altitude, base into corresponding altitude. ठीक है, corresponding altitude या हम base into half base into height बोल देते हैं, बेसिक उसमें elements. But when the coordinates of the vertices are given, then what will be the area of a triangle? Coordinates of vertices, coordinates of A, x1 y1, B x2 y2, C x3 y3. अब इसमें इसका एरिया क्या होगा? 1/2 हम एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल यूज कर लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल यूज कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2. अब देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है, कैसे एक रिदम से हम चलते हैं. अब देखिए, और इसमें ब्रैकेट्स होते हैं. ब्रैकेट से पहले हम x1 लेते हैं, सभी में ब्रैकेट से पहले क्या है? x1. 1 के बाद क्या आता है? 2, फिर आता है 3. लेकिन ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2. 2 के बाद क्या आएगा? 3. 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 और फिर 1 के बाद मान लो 3 के बाद 1 के बाद फिर 2, ऐसे इस सर्कल में चलेंगे. x2 लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या आना है? y. लेकिन रिदम क्या है? फॉलो होगा वही. x2 है तो कितना? y3 माइनस y1. पहले x1 था, फिर प्लस में x2, फिर आगे क्या आएगा? प्लस का x3 प्लस x3. अब x3 आ गया, रिदम वही फॉलो होगा ब्रैकेट के अंदर. ब्रैकेट कितना? 3 के बाद क्या आएगा? 1 और फिर 2. लेकिन ब्रैकेट के अंदर y वाले आएंगे तो y1 माइनस y2. अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल क्यों यूज किया? एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल इसलिए यूज किया बिकॉज एरिया इज ऑलवेज टेकन इन नेगेटिव. कोई लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, वो नेगेटिव नहीं होता. दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन पॉजिटिव, टेकन इन पॉजिटिव. ठीक है. अब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना आपको आता होगा. व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? मान लो लेट -7, एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ -7 -3/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 3/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 3/2. ठीक है, समझिए. तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल इसलिए यूज कर लिया हमने ताकि अगर ये नेगेटिव आ जाती है वैल्यू तो वी हैव टू फाइंड द एरिया. तो फिर हम उसको सीधा हम पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. इसको मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूं हाउ टू लर्न इट. हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल x2. अब देखिए ब्रैकेट सही है, x1 ब्रैकेट प्लस में x2 फिर प्लस में x3. अब x1 है तो 1 के बाद क्या आता है? 2. ब्रैकेट के अंदर हमेशा y वाले y कोऑर्डिनेट्स रहेंगे तो x1 के बाद क्या आता है? 2. तो y2. 2 के बाद क्या आता है? 3. y2 माइनस y3 प्लस में आगे x2 आना था. 2 के बाद क्या आता है? 3. y3 माइनस y1 फिर x2 था, फिर आगे आना था x3. 3 के बाद क्या आता है? 1 and 2. तो लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होगा? y वाला, तो y1 माइनस y2. दिस इज हाउ यू लर्न द फार्मूला ऑफ ए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. And this next exercise, that is 7.3, that is based on this formula. Let's come to the exercise. Now let's see the first question of exercise 7.3. It is find the area of a triangle whose vertices are A. There are two parts. We will solve one part and next part you can try on your other part. You can try on your. Let's see first question. First part. The vertices are A, B, C. Coordinates are given.
वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक रफ स्केच बना लेते हैं। ABC कोऑर्डिनेट्स ऑफ A 2, 3 -1, 0 2, -4। area triangle ABC। first of all we will write the formula। तो 1/2 x1 ब्रैकेट y2 minus y3 प्लस में x2 ब्रैकेट 2 के बाद क्या था 3 y3 minus y1 प्लस में x2 x3 के बाद क्या आ जाए 3 y1 minus y2। ठीक है, दिस इज 1/2। 1 वाले हैं 2, 3। नाउ x1 कितना है 2, तो 2 into y2 minus y3, y2 कितना है 0, 0 minus -4, 0 minus -4, 0 minus -4। फिर उसके बाद में प्लस में x2 कितना है भाई -1। फिर उसके बाद में माइनस x2 के बाद में क्या था y3 minus y1, तो -4 माइनस में 3 और प्लस में x1 x2 अब क्या आएगा x3 is 2 into माइनस उसके बाद क्या था ये 3 है 3 के बाद 1 and 2 तो कितना y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 0। या सिंप्लीफाई कर लें आप इसको 1/2। अब देखिए 0 -4 माइनस प्लस तो +4 आ जाएगा तो 2 into 4। अब ये देखिए इसको लेट इट बी हियर -1 -4 -3 इट इज -7 और +2 3 -0 कितना 3 तो 2 into 3। दिस इज इक्वल टू 1/2 2 into 4 8 माइनस प्लस 7 into 1 प्लस का 7 और प्लस 2 3 जा 6 1/2 into 8 plus 7 15 plus 6 21। तो 21 की एब्सोल्यूट वैल्यू 21 ही होती है। 21 की एब्सोल्यूट वैल्यू 21 ही होती है। तो दिस इज इक्वल टू 21/2 यूनिट स्क्वायर। This is the area of triangle ABC। On the same pattern, you can solve second part। Is it clear? Now, question number second, you have to, in each of the following, find the value of k for which the points are collinear। Points are collinear means they are in a straight line. They lies on a straight line। देखिए, if there are 3 points A, B, C, A, B, C, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो जो ये ट्रायंगल बनता तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC कुछ न कुछ होता ना। बट इफ पॉइंट A, अगर ये B पॉइंट यहां पे आ जाए, ये B पॉइंट कम्स हियर, B, A, B, C, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर विच इज गिवन इफ 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन पे लाई करते हैं तीनों। ये बी भी अलग नहीं है, नॉन कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर है, यहाँ लाई करता है। तो इसमें तो कुछ न कुछ एरिया होता है, लेकिन अब मैं ये बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0। भाई थोड़ा सा भी ऊपर होता, नॉन कोलिनियर होता तो कुछ एरिया होता, बट इट लाइज ऑन दिस वन, तो area of triangle ABC is 0, ABC is 0। So this type of question in which you have to find the value of k when the points are collinear, this type of question are very important from examination point of view, very important you can say। Okay, now area of the points are collinear, तो लिखेंगे आप, you will write points are collinear, therefore area triangle ABC
ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फार्मूला पुट करेंगे आप पहले, साथ ही लिख देंगे एरिया ट्रायंगल ABC x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2, ठीक है। These points are collinear, therefore this area is equal to ठीक है, area of a triangle is equal to 0. Why? Because the points are collinear. Points are collinear. इसलिए the triangle which formed by triangle ABC will be equal to, area will be equal to 0. Now put the values and get the value of it. Therefore 1 by 2. This is equal to 0 because points are collinear. Now write area of triangle. This is 1 by 2. x1, what is x1? 7. y2 minus y3. y2, what is y2? 1 minus 8. Plus में x2. x2 is 5. x2 फिर y3, that is k minus 2. k minus 2. I can write plus 2 there. Minus 2, this is plus 2. Plus में x1, x2, now x3. What is x3? 3. x3 into y1 minus y2. What is y1? Minus 2 and minus 1. This is equal to 0. This is equal to 0. We have this one. Now this is 1 by 2. 1 by 2. When you will take to other side, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा? This will be 0 into 2 by 1. 0 into 2 by 1 is 0. 0 into 2 by 1 is 0. Now this is 7 into 1, 7 minus 7k plus में 5k minus 5 is 10 और ये minus 3 sorry plus 10 minus 3 into 3 minus 9. This is equal to 0. अब देखिए भाई इसकी वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल हटाएंगे. इफ यू रिमूव एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल प्लस माइनस 0 हो जाएगा. प्लस माइनस 0 इट इज सेम, इट इज 0. नाउ माइनस 7k प्लस 5k कितना आ गया? माइनस 2k और माइनस 9 प्लस का 10 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस 7 दैट इज प्लस का 8. This is equal to 0. Remove the absolute value symbol. It will be plus minus 0. Plus minus 0 is 0. So you can write minus 2k plus 8 is equal to 0. Or take 8 to other side. Minus 2k is equal to minus 8. Now cancel out minus on both sides. So k is equal to 8 by 2. 2 1 ja 2 4 ja. K is equal to 4. This is our answer. This is our answer. Is it clear? Same way you can do part second. Let's solve it. Points are collinear. You will write points are collinear. Therefore area triangle ABC that is equal to 1 by 2. 1 by 2. जब equal लिखना है तो आप सीधा ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको. x1 into y2 minus y3 प्लस में x2 y3 minus y1 प्लस में x3 y1 minus y2. This is equal to 0 because points are collinear. Now put the value and get the value of k. Now this is 1 by 2 x1. What is x1? 8. y2 minus y3. y2 minus 4 minus 5 that is plus 5. Plus में x2 is k into y3 minus y1. y3 is minus 5, y1 is minus y1 minus 1. तो प्लस में x3, what is x3? 2, then y1 minus y2. y1 is 1 minus 4, that is 1 plus 4. So this is equal to 0. Now 1 by 2 take on the other side, that is 0 into 2 by 1. 0 into 2 by 1 is
0. Now simplify it. -4 plus 5 कितना 1 1 into 8 8 -5 -1 -6 -6k और ये 4 plus 1 5 5 दिया 10. This is equal to 0 because 1 by 2 2 into 0 into 2 by 1 this is 0. Now this is minus 6k. Now 10 plus 3 10 plus 8 18. This is equal to 0. Remove the absolute value symbol. When you remove it you will write plus minus 0. It is 0. So minus 6k plus 18 is equal to 0. Minus 6k is equal to minus 18. Now cancel out minus from both sides. So k is equal to 18 by 6. 6 will just 6 3 ja. So k is equal to 3. This is our answer. Is it clear? This is how we will use the area of triangle formula to find the unknown value in coordinates of collinear points. Now find the area of a triangle formed by joining the midpoint of the sides of a triangle whose vertices are these. There is a triangle ABC whose vertices are these. We have to find the area of a triangle formed by joining the midpoints of the sides of triangle. अब इसके जो midpoints है triangle ABC, the midpoints of triangle ABC, let it is D, E and F. These are the midpoints. D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC. We have to find the area of the triangle formed by the midpoint of the sides of the triangle ABC. We have to find the area of DEF. After that, find the ratio of this area. This area means triangle DEF का area to the area of the given triangle. Triangle ABC का जो area है, उसके साथ ratio of area of DEF या area of DEF ratio area of ABC. You have to find it out. Okay. Now, अब इसमें first of all vertices of triangle ABC are 0, -1, 2, 1, 0, 3. Let DEF are the midpoints. Let these are the midpoint of the sides AB, BC and CA of triangle ABC. Let D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC of triangle ABC. Okay. First of all, we will find the coordinates of EF. Now, coordinates of D. Coordinates of D क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे. क्या कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला. तो क्या होंगे? मान लो ये x1 है, ये x है, तो क्या होगा भाई? मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x1 plus x2 by 2. ये तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 plus y2 by 2. एक बार फार्मूला लिख दिया, उसके बाद हम बाकी फाइंड आउट करते हैं. दिस इज x1 plus x2 by 2. x1 0 0 plus 2. ये x1 ये x2 0 plus 2 0 plus 2 by 2 comma -1 plus 1 by this is equal to 0 plus 2 2 by 2 is 1 comma 1 -1 plus 1 0 0 by 2 कितना हो जाएगा? 0. तो coordinates of D are 1 comma 0. This is 1 comma 0. Now coordinates of E. Coordinates of E are E के coordinates x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. Now 2 plus 0 by 2 2 plus में 0 by 2 comma 1 plus में 3 by 2 1 plus में 3 by 2. This is equal to 2 plus 0 2 by 2 is
1 1 plus 3 4 4 by 2 is 2. This is 1 comma 2. Now coordinate of F, midpoint of AC. Coordinate of F. Coordinate of F क्या होंगे भाई? Now 0 plus 0 by 2, 0 plus 0 by 2, comma 3 plus में minus 1. 3 plus में minus 1 means 3 minus 1 by 2. 0 by 2, 0, 3 minus 1, 2, 2 by 2 is 1. Is it clear? Now coordinates of F are 0, comma 1. Now we have to find the area of triangle BEF. After that we will find the area of triangle ABC and then we will find the ratios of these areas. Now, area triangle DEF. Area triangle DEF. अब 1 by 2 फार्मूला लिखेंगे आप x1 y2 minus y3 प्लस में x2 into y3 minus y1 और प्लस में x3 then y1 minus y2. This is 1 by 2 x1. What is x1? DEF का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. ये मान लो 1 वाले ये 2 वाले ये 3. Now x1 is 1 into y2 minus y3 2 minus 1 2 minus 1 प्लस में ये x1 था ये x2 कितना है 1 1 into y3 minus y1 1 minus 0 प्लस में x3 is 0 0 into 0 ही हो जाएगा. Even then we will write y1 minus y2 0 minus 2. Okay, now this is 1 by 2 2 minus 1 1 1 into 1 1 1 minus 0 1 1 into 1 1 और ये प्लस में 0. This is 1 by 2 और ये कितना हो गया 2 into 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होती है. कितना आ गया? This is 1 unit square. So area of triangle BEF is 1 unit square. Now we will find the area of triangle ABC. Area triangle ABC. We will directly write the values because once we have written the formula. Now ABC. x1 that is 0. 0 into y2 minus y3. 1 minus 3. Plus में x2. This is 2. 2 into 2. x2 फिर ये y3 minus y1. तो 3 minus 1 that is 3 plus 1 और प्लस में x3 is 0. So 0 into y1 minus y2 minus 1 minus 1 minus 1 1 by 2 0 into anything it is 0. 3 plus 1 3 to 4 to 8 और प्लस में 0 into minus 2 ये minus 2 0 into minus 2 0. So this is 1 by 2 into 8 2 1 2 4 this is 4 unit square. ठीक है. Now first we have to find area of DEF. This is 1 unit square. Then we have to find the ratio of DEF and ABC. DEF and ABC. तो area of DEF by area of ratio find out करनी है. Area DE triangle DEF by area triangle ABC. This is equal to area of DEF is 1. This is 4 unit. Unit से unit कट जाएगा. This is 1 by 4. जो रेशियो है उसकी कोई यूनिट नहीं. Now area triangle DEF ratio area triangle ABC. This is equal to 1:4. This is equal to 1:4. Is it clear? कि भाई इसकी जो एरिया है इसके 1/4 के इक्वल. Now this question you have done in 9th class also. This question you have done in 9th class also. ठीक है. एक बार मैं वैसे बता देता हूँ what you have done in 9th class, how you have done it. Now
these are the midpoints. This is parallel to this one and this is half of this one, so this is equal to this one. ये और ये equal हो जाएगा. In B, E, F, D, this is a parallelogram, this is diagonal, तो area of this is equal to area of this one. इसका और इसका एरिया क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम को डायगोनल टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज में कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड करता है, कॉन्ग्रुएंट्स का एरिया इक्वल होता है, इसका और इसका एरिया. सिमिलरली यू कैन राइट दिस एज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम ये डायगोनल, तो एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस एज पैरेललोग्राम, तो दिस इज डायगोनल, तो एरिया ऑफ 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ 1 2 3 4 इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है. सो दिस इज 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC. Okay, this you have done in 9th class also. You have to keep all those what you have done in previous class in mind. Okay, that can be applied. किसी चीज में आपको उससे पूछे जा सकते हैं. आप पुराने फार्मूले, पुराने बेस to solve any question, you cannot forget that. You have to remember each and every point of previous class. Is it okay? Let's proceed to the next question. Let's see fourth question. Find the area of a quadrilateral whose vertices taken in order are A, B, C and D. तो draw the quadrilateral ABCD, rough quadrilateral बना लीजिए. तो ABCD we have to find the area of this quadrilateral. ठीक है? तो इनके नाम ले लेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के. Let the vertices of quadrilateral are A, that is equal to -4, -2, B -3, -5, C 3, -2 and D that is 2, 3. Okay. Now, अब क्या करें? We have to find the area of this quadrilateral. Now join AC. Join AC. Now we get two triangles ABC and ACD. So we will find the area of this triangle and this triangle. Then we will add the area of these two triangles. Then we will get the area of a quadrilateral. So first of all, we will find the area of triangle ABC. So join AC. Join AC. Now in triangle ABC. ABC, or you can see you can directly write area triangle ABC. So first of all, write the formula. x1 into y2 minus y3 प्लस में x1 है, अगला आएगा x2, देन 2 के बाद में 3 y3 माइनस y1 प्लस में x2, देन x3 that is equal to y1 minus y. This is equal to 1/2 x1. What is x1? -4 into y2 minus y3, y2 minus 5 minus -5 minus -2, that is plus 2. Now x2, this is x1, this is x2, this is -3, y3 minus y1, y3 is -2 minus -2 यानी कि plus 2, प्लस में x3 कितना है? 3, then x3 3, then y1 minus y2, -2 minus 5 कितना हो जाएगा? प्लस 5. This is equal to 1/2 -4 into this is -5 in plus में 2 -3 into 0 plus में 3 into -2 plus 5 कितना हो गया? 3. This is equal to 1/2 -4 -3, this is 12 and this is 0 और प्लस का 9. This is 12 plus 9, 21 minus 0 no value, so this is 21. So 1/2 into 21, this is equal to 21 by 2 unit square. This is the area of triangle ABC. Now we will find the area of ACD. Area triangle ACD. This is 1/2
x1 वाले एलिमेंट्स सॉरी 1 वाले 2 3 now x1 minus 4 into y2 minus y3 y2 is minus 2 minus 3 then x1 then x2 this is plus 3 plus 3 y3 minus y1 3 minus minus 2 that is plus 2 then x1 x2 then x3 this is plus 2 and y1 minus y2 minus 2 or minus minus plus 2 now this is 1 by 2 minus 4 into minus 2 minus 3 now minus 5 or plus का 3 into 3 plus 2 this is 5 plus में 2 into minus 2 plus 0 so 1 by 2 minus 4 into minus 5 this is 20 plus में 3 5s are 15 plus में 0 this is 35 1 by 2 into 35 that is equal to 35 by 2 so area triangle ACD this is itne unit space now we have to find the area now add these two areas of these two triangles area triangle ABC plus में area triangle ACD area triangle ABC plus area triangle ACD this is equal to 21 by 2 21 by 2 plus में 35 by 2 unit square now area of this triangle plus this triangle is area of triangle quadrilateral ABC area ABCD this is equal to LCM is 2 21 plus 35 this is equal to 5 plus 1 6 3 2 56 by 2 2 say 2 2 ja 2 8 28 unit so area of this is 28 unit square area of quadrilateral ABCD is 28 unit square now let's see the last question of this exercise you have studied in class 9 that a median of a triangle divide it into two triangles of equal areas let this is A B C triangle ABC this the triangle and a median क्या होता है जो नेक्स्ट लाइन के the line segment which joins a vertex with the midpoint of the opposite side जो opposite side है उसके means let this is D is the midpoint of BC D is the midpoint of BC and this AD is the median in 9th class we have studied that the median divide the triangle into two triangles of equal areas in 9th class a theorem was there area of triangle ABD is equal to area of triangle ADC in 9th class we have studied it now verify this result for triangle ABC whose vertices are given vertices दे रखे हैं उसको वेरीफाई करना है जो रिजल्ट था जो थ्योरम 9th क्लास में की थी उसको हमें vertices of ABC are given we have to verify it means we have to prove that we have to check that area of ABD is equal to area of triangle ADC the vertices of A then 4 comma minus 6 B 3 comma minus 2 C 5 comma ठीक है now coordinates of vertices are A this is 4 comma minus 6 B 3 comma minus 2 and C 5 comma 2 now we have to verify that area of these triangles are equal first of all and D is the midpoint of BC first of all we will find the coordinate of point D is the midpoint of BC the coordinate of midpoint
लिखिए D is, yeah, you can write BD is equal to DC. BD is equal to DC, रीजन होगा AD is AD is a median, therefore D is the midpoint. D is the midpoint. So coordinate of D, coordinates of D, that is equal to, suppose it is x comma y, then x is equal to x1 plus x2 by 2. This is equal to x1 3, x2 5. 3 plus 5 by 2, that is 8 by 2, it is equal to 4. And y is equal to y1 plus y2 by 2. y1 is minus 2 plus 2 by 2, that is 0 by 2. This is equal to 0. This is equal to 0. Coordinate of D are 4 comma 4. So coordinate of D are 4 comma 0. Now we will find the area of triangle ABD and area of triangle ABC, because now we have coordinates of all the three vertices in both the triangles. Now area of triangle ABD. Area triangle ABD. You will write the formula 1 by 2 x1 plus में x1 into y2 minus y3 plus में x2 into y3 minus y1 plus में x3 into y1 minus y2. This is the case. 1 by 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now this is x1 4, y2 minus y3, y2 minus y3, minus 2 minus 0, minus 2 minus 0, plus में x2 is 3, y3 minus y1, y3 is 0, 0 minus 6, यानी कि प्लस का 6, प्लस में x3 is 4 into y1 minus y2, minus 6 minus 2, that is plus 2. This is equal to 1 by 2 into minus 2 minus 0 कितना, minus 2 minus 2 into 4 minus 8. 6 3 are 18. Minus 6 plus 2 minus 4 into 4 minus 16. This is equal to 1 by 2. अब minus 8 और minus 16 minus 24, minus 24 और plus का 18, minus 24 और plus का 18 कितना हो गया, minus 6. Now absolute value of minus 6 की absolute value कितनी होगी, 6. तो 1 by 2 into 6, 3 unit square. तो area of this is 3 unit square. Now we will find the area of ADC. Area triangle ADC, that is equal to 1 by 2. ADC 1 by 2, x1 कितना है 4 into y2 minus y1 0 minus 2 plus में x2 is 4 into y3 minus y1 2 minus 6, that is plus का 6, plus का x3 कितना है 5 into x3 5, फिर y1 minus y1 minus 6 minus 0, 1 by 2, 0 minus 2 कितना, minus 2 into 4 minus 8, 6 2 जा 8 4 जा 13. Now minus 6 minus 0 minus 6 minus 6 5 जा minus 5. That is equal to 1 by 2 minus 38, minus 38 और plus का 32 कितना होगा, minus 6. Absolute value of minus 6 is 6. 1 by 2 into 6 2 1 जा 2 3 जा 3 unit square. So area triangle ABC is equal to 3 unit square. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ABD
3 unit square, and area triangle ABC 3 unit square. तो हो गया भाई, तो लिखिए एरिया ट्रायंगल ABD is equal to area triangle ABC, this is equal to 3 unit square. यही हमें प्रूव करना था, ठीक, लिखेंगे we have to verify this result that area of these two triangles are equal. We have proved that area of these two triangles are equal. Just write hence verified. Means this result is verified. Is it clear? This was all about exercise 7.3, which was related to the area of a triangle when coordinates of all the three vertices were given.